What does it take for a producer in Bollywood to maintain that level of demand? You need to be focused on what you're doing. You need to have films which can satisfy the Indian audience palate. एक फिल्म है, कमला हैरिस भी इन्वॉल्व है उसमें, अश्विन भी इन्वॉल्व हैं. कमला हैरिस तो पूछेंगे भाई नाउ फाइंड बोनी कपूर फॉर अस. फिल्म डेब्यू के बारे में अगर आप कहें एज एन एक्टर, हाँ वो आप देख के बताइए. AK वर्सेस AK में हम देख चुके हैं. वैसे आपको कैसा था? बहुत बढ़िया था, बहुत नेचुरल था, बेसिकली नेचुरल था. फर्क ये है कि वहाँ पे मेरा भाई अनिल था एंड आई प्लेड द एल्डर ब्रदर. Right. हर्ष वाज माय नेफ्यू. आई प्लेड माई सेल्फ देयर ऑल्सो. हियर ऑल्सो आई एम प्लेइंग माई सेल्फ. आपने एक इंटरव्यू में आपने ये भी कहा है कि दैट जो फैन फॉलोइंग जो साउथ के स्टार्स की है वो अनप्रेसिडेंटेड है. मतलब रात के भी शोज होते हैं साउथ में. मे बी शायद वो उस लेवल की फैन फॉलोइंग बॉलीवुड में शायद मिसिंग है. साउथ के हीरो जो चीफ मिनिस्टर ही बने, हमारे यहाँ का कोई हीरो ऐसे चीफ मिनिस्टर बनने के नजदीक ही नहीं पहुंचा है. Boney ji, huge pleasure to have you back on Bollywood Hungama. Pleasure mine too, Faridoon. Good to see you again. Same here, sir. Mr. India released in 1987. जी. 2022 Valimai is coming up. जी. Mr. India was historic. Valimai is having a historic buzz around it. What does it take for a producer in Bollywood to maintain that level of demand from the audience? I don't know when or if I will ever come with my autography. Well, whenever that happens, we can't just really depend on them. I don't want to keep you and your viewers waiting for my biopic or my autobiography. Right. Well, I feel the simple thing is that you need to be focused on what you're doing. You need to keep in mind what the audience wants. You need to have films which can satisfy the Indian audience palate. And that's not an easy job. It's all the time, sometimes you get carried away by a subject which you feel has a potential to be connected with everybody. And it doesn't work. Like Roop Ki Rani Choru Ko Raja. It was aimed at the pilot of the pan-India audience, but somehow it didn't work. But Mr. India worked, although it was a novel subject. For the first time, we had attempted a film with a lot of special effects, and that too, I had made it a point that we are going to shoot all in camera. Nothing will be done in post, because those days in India, post was pathetic. So fortunately for us, things worked out well in Mr. India. And unfortunately, even where the subject is concerned, even where the commercial elements are concerned, the novelty of course was there. In Roop Ki Rani Choru Ko Raja, we tried to get in all that, and where novelty is concerned, we got the train robbery, we got the pigeon playing a part, we got lost and found. Everything was put together, but it didn't work. So there's never a fixed formula. Again, after that, I made Loafer, I made Sirtum. Sirtum again was very well connected. Loafer was a good, it was a good success, not a blockbuster, but a good success film. Then Judai connected very well. So I've always had a mix of good subjects. Then it was No Entry, it was Wanted. No Entry was really funny, and in fact it was about infidelity. It dealt with kind of infidelity, but no skin show, nothing vulgar, nothing. It was something which everybody with their families can enjoy. And Wanted was again something which was catering to all the across the Indian subcontinent. Everybody's taste buds were satisfied with Wanted because it had action in a way which they like to see the hero performing action. So they were all a mixed genre. Then I did Mom, that also connected with the women audience, that also was successful, although not a blockbuster. Again, Tevar, which had every element that I thought should be there. We tried to pack everything, but it didn't work. So there is no fixed rule what works, what doesn't work. But the attempt should be to satisfy everybody across the age groups, everybody, whether he is in Bihar or in Tamil Nadu or in Rajasthan or in Punjab. The attempt should be to make a film which is simply understood. We should not attempt Interstellar. मैं 2 बार देख चुका, अब तक समझ में नहीं आई मेरी. Either I'm a novice or probably, and I'm sure there will be many like me who wouldn't have understood, rather enjoyed every nuances of that film. He's a fantastic director. Christopher Nolan is one of the best directors, but somehow it didn't connect with me. So I try to make films where I get connected, because I feel I'm a simple man, and I have a kind of a mind which probably
has grown with time, knowing what the Indian audience would like. I mean, I may not be absolutely 100% sure, but I tread along, I think I'm there 80, 60, 70, 80%. I'm there to put everything together to satisfy the pan India audience. And the same goes for Valimai. Valimai is one film which has fantastic action, a lot of thrills, chases I've never seen before, action as never seen before, in my opinion. Well, that kind of good action. And hardly anything was done in post. Everything is live. And of course, the charisma of Ajith is there. He works big time in Tamil Nadu, and I'm hopeful and sure, keeping my fingers crossed that he connects well with the North Indian audience too. Because he has a North Indian look. You know, his mother is a Sindhi and his father is a Malayalam, so he has that North Indian look. Okay. So hoping that he connects with the Hindi audience too. All right. So, Boniji, there is this debate which is going on right now that the South content is becoming mainstream. It's becoming pan India now. See, it's not South content. The reach is tremendous. All what I spoke now, most of the big directors and heroes do that. In fact, they don't go for anything which is. They're not competing with Hollywood. In technique, they are. In content, they are picking up subjects which are satisfying the Indian palate. And their films mainly are hero oriented, and the hero remains the hero in those films. Then they have the family elements. They have the all kinds of emotion. There is romance also thrown in. Everything is thrown in good measure. There's a villain, there's a comedian, all those things, various kind of things are put into a place where the mix becomes palatable. The mix becomes, entertaining enough. And that's what they do, and that's the reason. See, today in Bombay, it was only the actor, producer, director who had their studios. There you have filmmakers, film producers, who were not necessarily directors. Nagi Reddy, AVM Megapan, Ramanaidu, Vasu Menon. L.V. Prasad, of course, directed a few films, but a lot of his films were directed by outsiders. And they all had their studios. In fact, they still have their studios. Right. So, which means they struck a right chord with the audience, and they knew what the audience wants. And they were the people who were making their successful South films into Hindi too. Of course, those days, action was not their forte. Family dramas were. But again, that used to cater, it need not be action all the way for the audience to consume. It should be something really, like Hum Aapke Hain Kaun. It was something which the family is connected. Maine Pyar Kiya again was a love story. Bobby was a love story. So those are genres which are universal, which are identified by the audience. Bobby was a huge success. Same Raj Kapoor did Mera Naam Joker. Initially, it was not accepted, but later, of course, became a classic. It became a classic. Same thing happened with Lame. It was not accepted by the majority of the audience when it released first, but now whoever sees the film feels that this is amongst S. Chopra's best films. So they were mistimed. The content was there, but they were mistimed. The content was a little more mature, and but they were never going to be a mass oriented film. They were never going to be there. But nonetheless, there is, you see, today we have matured as an audience. We have a lot of multiplexes, and in the cities you have the audience who can consume content which has got a lot of subtleties and a lot of things which are maybe foreign. They're not fully Indian, or they are not at all Indian. And that is the reason there are some films which do very well in multiplexes, but they don't become. See, if you look at the chart of all-time blockbusters, you have Gaddar, you have Raja Hindustani, you have Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, you have Bobby, you have Sholay, you have Mr. India, you have No Entry, you have various films, V Shantaram, Do Aankhein Bharat, Mehboob Khan's Mother India, Mehboob Khan's Andaz. These were all films which had, you see, romance is something which can be identified with everyone and any age group, because everybody goes through that phase in life.
romance is the most essential part of everybody's growth and everybody's life. So that is something very easily identifiable. Our family dramas are easily identifiable because India till today has not come out of the joint family system. There are there are not as much as they used to be, but they understand what family is all about. In fact, even the core family is Indian. For instance, even if the brothers live separately, the brothers' individual family, the core family, the husband, wife, children, and all, they connect as a family. Earlier times, there used to be a joint family. There used to be 3 brothers or 4 brothers, their children, everybody growing. Even now, there are some places, there are a lot of such families where you have the whole lot working together, businesses combined, all those things are there. And sometimes things go on permanently, sometimes they realize that it's better that we part ways. But the core family element also understands the family emotions. So that is how the family subjects also click, which was the forte of South. Breaking of the families, husband-wife relationship, besides the romantic film, like Milan was a romantic film, reincarnation with romance. So they have stuck to what the Indian audience look for, want, and can easily enjoy. And then music is a very, very big part. A hit music in a film carries a film, in a big way. Similarly, our Hindi films today, in my assessment, in my mind, earlier when I started my career as a filmmaker, when I bought, rights from South to make it in Hindi, what I used to do, when I watched the film in theatre, those days video wasn't there. I'm talking about the late 70s, when I picked up Hum Panch and Wo Saat Din, all these films, including Beta. I used to like the film, select the film, and buy the rights of the film. After that, I used to carry a cassette recorder with me in a theatre and record the reactions. कहाँ पे ताली बजती है, कहाँ पे सीटी बजती है, कहाँ पे कहीं पे तरस आता तो ये ऑडियंस की ये भी रिएक्शन, कहाँ पे सीटें हिल रही है, सीट बोरिंग लग रहा है, तो कैसेट फिल्म में अपने राइटर को दे देता था कि भैया ये ऐसा रिएक्शन था इस पिक्चर में. तो वॉट एवर यू राइट हैज़ गॉट टू हैव दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इन द थिएटर. अब जैसे मैंने जब सिर्फ तुम देखी थी, उसके क्लाइमेक्स में बारिश थी. माई ब्रीफ टू द डायरेक्टर वॉज, व्हेन आई एम सिटिंग इन द थिएटर आई शुड सबकॉन्शियसली पुट माई फीट अप थिंकिंग कि पानी थिएटर के अंदर आ गया. आपको जितने फायर ब्रिगेड चाहिए, जितने रेन मशीन चाहिए मंगा लो. पर ये है कि सबकॉन्शियसली पिक्चर देखते देखते इफ यू सी सिर्फ तुम, आपके पैर ऊपर हो जाने चाहिए क्योंकि ये लगना चाहिए कि थिएटर के अंदर पानी आ गया. सो कन्विक्शन इज वन थिंग, सिंसियरिटी इज वन थिंग. तो ऑल दिस एलिमेंट्स कुछ मैंने पिकअप किए हैं और कुछ हैं ऐसे दिल में. मे बी sometimes overdo such things. Sometimes people may think that I'm from old school, but then I wouldn't have lasted if I was from old school for 44 years. I started making films in 79 was my first attempt to produce a film, and I bought the rights of Hum Panch. Before that, I was an assistant to Shakti Samant for 2 years. I assisted him in 5 films: Anurodh, Mehbooba, Great Gambler, एक picture बन रही थी महागुरु, and Anand Ashram. Before that, I was an assistant editor with Kamlakar Karkhanis, who used to be the editor of Manmohan Desai. So I have seen different aspects of filming, the crafts. I've been through it. And when I was assisting Shaktida, the office was in Natta Studios, Andheri. So whenever there was no shooting, I used to come to Lakshmiji's house since he was known to us. He was giving music for a film, and I used to sit in his music room and enjoy the process of songs being made. एक राइटर कैसे एक्सप्लेन करता है, डायरेक्टर कैसे एक्सप्लेन करता है, हाउ लक्ष्मी जी कंज्यूम्स इट, हाउ आनंद बख्शी कम्स हमिंग अ ट्यून, ऑल दोज थिंग्स आई हैड सीन. आई हैव सीन द ग्रेट राज कपूर सिटिंग म्यूजिक सिटिंग देयर. आई हैव सीन नाम की म्यूजिक सिटिंग में उधर था, मनमोहन देसाई की म्यूजिक सिटिंग में उधर था. कई साउथ के प्रोड्यूसर आते थे, उन लोग कैसे टूटी फूटी हिंदी में समझाते थे, सर ये सिचुएशन ऐसा है, ये ऐसा आना जरूरी है. तो कैसे लक्ष्मी जी उसको अपने म्यूजिक में संवारते थे, absorbing all what their requirement is. आपने एक इंटरव्यू में आपने ये भी कहा है कि दैट जो फैन फॉलोइंग जो साउथ के स्टार्स की है वो अनप्रेसिडेंटेड है. मतलब रात के भी शोज होते हैं साउथ में. मे बी शायद वो उस लेवल की फैन फॉलोइंग बॉलीवुड में शायद मिसिंग है आज के दौर में. आपने नोट किया होगा या आपके ज़हन में होगा
साउथ के हीरो जो चीफ मिनिस्टर ही बने, Of course. चाहे वो एमजीआर हो, एनटी रामाराव हो, जयललिता हो, करुणानिधि भी फिल्म राइटर था। हमारे यहाँ का कोई हीरो ऐसे चीफ मिनिस्टर बनने के नज़दीक ही नहीं पहुंचा है। तो दैट इज दे ट्रीट देयर स्टार्स एज डेमीगॉड्स, दे वर्शिप देम। जब इन बड़े हीरो की पिक्चर लगती है जिनके फैंस बहुत ज़्यादा है, वो दूध से नहलाते हैं उनके कटआउट्स को, जो यहाँ पे नहीं होता है। एंड देयर द फैंस आर वेरी लॉयल। यहाँ पे हमारे फैन जो है ना, दे आर नॉट, दे जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्टार वेरी इजीली। एक ज़माने में जो दिलीप कुमार का फ़ैन था, बाद में राज कपूर का हो गया, फिर देवानंद का हो गया, दे जस्ट कीप ऑन कमिंग। उसकी पिक्चर अच्छी रही, गाइड में तो बहुत अच्छा काम किया यार। तो वहाँ पे तो फैंस के आपस में टक्कर भी होती है, जो इसका फ़ैन है वो उसको बोलेगा भाई मेरे हीरो की पिक्चर ज़बरदस्त है। यहाँ पे ऐसे आपने कभी झगड़ा होते हुए देखा नहीं होगा। राइट। यहाँ पे मैं समझता हूँ जो वर्शिप होते थे स्टार्स, वो राजेश खन्ना की जो मतलब स्टारडम थी, सुपर स्टारडम थी। आई हैव सीन ही इज डन फिल्म फॉर माय फादर। जब हमारे घर आते थे तो पब्लिक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी पीछे। भाग्य राजा जब मेरे घर पे आता था, पूरे उधर की साउथ इंडियन कम्युनिटी को पता चल जाता भाग्य राजा आया हुआ है। उसके बाद अगर कुछ हिस्टेरिया हुआ तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ हुआ है। और आज मतलब जो सलमान के फैंस है, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव। ही इज गॉट अ ह्यूज चंक ऑफ फैंस who long who wait for his films. See, स्टारडम का पहला, मैं समझता हूँ, the hallmark of a star is when his average films do super hit business. Exactly. मतलब स्टार से ओपनिंग लगती है, ओपनिंग से पिक्चर सेफ्टी फैक्टर पे आ जाती है, और फिर जैसे भी पिक्चर हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर डोंट लूज। दैट इज द रीजन द स्टार्स आर चेस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स। दैट इज द रीजन दे गो फॉर स्टार ओरिएंटेड फिल्म्स. But not all stars have that kind of a pull. But in South, whether it is Telugu, whether it is Kannada, whether it is Tamil, whether it is Malayalam, they have a cult following. Malayalam mein it is Mohanlal, Mammootty, now Prithviraj, Paul, and in Andhra you had N.T. Ramarao, Nageshwar Rao, Krishna, Shobhan Babu. Now it is Chiranjeev, Mahesh Babu, Pavan Kalyan, Junior NTR, Allu Arjun, Ramcharan, the entire Venkatesh is there. Everybody has their own, and they have their own loyal fans. Of course. Tamil mein aa jao, it is MGR, Shivaji Ganeshan, Gemini Ganeshan. The volume of fans may differ a little bit, a little variant, not a huge difference. Now you have Rajnikant, you've got Ajith, you've got Vijay, you've got Dhanush, you've got Shivakarthikeyan, you've got Vikram. They have their own followings. Then there is one, there are several of these actors. Many actors. कन्नड़ा में राजकुमार की मतलब गॉड लाइक फॉलोइंग थी। एंड हिज सन्स, पुनीत के भी देखा कितने लोग, द प्रोसेशन ऑफ हिज फ्यूनरल वाज ऑलमोस्ट लाइक unbelievable, that sight. Now Yash is there. Yash is there. Sudeep is there. Picture Sudeep. And Darshan is there. All these. And एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि that because of this loyalty that the fans have in South, the fan clubs, they tend to curb the piracy factor as much as possible. आपने एक इंटरव्यू में आपने कहा है कि that minimum I think 3 हफ्ते का विंडो होता है कनाडा में. I spoke to Yash, he said कि that the films run for 6 weeks and the fans they know कि अगर वो पहले हफ्ते में नहीं देख पा रहे हैं तो तीसरे हफ्ते में देख लेंगे, चौथे हफ्ते में देख लेंगे, तो they know it for sure that the film will be in theaters for 6, 7, 8 weeks easily, which is great for business, I believe. It is great, and at the same time, see, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पुष्पा जो दब होके लगी है, उसका भी लास्ट 4 हफ्ते जब से पिक्चर OTT में आ गई है, उसके बावजूद कुछ 25 करोड़ का बिजनेस हुआ है लास्ट 4 वीक में। तो जो मज़ा थिएटर में देखने का है वो लोग थिएटर में जाके देखेंगे। ऐसा नहीं कि जो थिएटर में उस 4 हफ्ते के बाद जो गया उनके घर पे टीवी नहीं है, या उनके घर पे ये OTT के मतलब जो प्लेटफॉर्म्स नहीं है, बट स्टिल थिएटर में देखने का अलग मज़ा है। वहाँ पे सीटी मार सकते हैं, वहाँ पे ताली मार सकते हैं, वहाँ पे हंस सकते हैं, वहाँ पे यू कैन हियर देयर कमेंट्स एंड ऑल दैट। घर पे बैठे बैठे तो आदमी मतलब होता ना कि पिक्चर देखता है जैसे कि यार, और ऊपर से डिस्ट्रैक्टेड रहता है। जो थिएटर पे जाने का मज़ा है वो घर पे देखने का नहीं है। बट फिर भी इन दिनों में क्योंकि कोविड रहा है एंड देयर हैव बीन रिस्ट्रिक्शंस, पीपल हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ वाचिंग फिल्म्स एट होम ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज दे अर्लियर सैटेलाइट पे जो पिक्चरें आती थी 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद आती थी। अब OTT वाले 4 हफ्ते में भी रिलीज कर लेते हैं, कुछ फिल्में 3 हफ्ते में रिलीज हुई, कुछ 2 हफ्ते में हो गई, हो गए, और कुछ तो प्रीमियर हुआ है OTT पे। बहुत हो गए, yeah, that's true.
तो ये this is something new and we've got to live with it. But the experience of audience of watching the film in the theater cannot be matched. Absolutely. So, बोनी जी, जब आप देखते हैं कि एक फिल्म है, कमला हैरिस भी इन्वॉल्व हैं उसमें, अश्विन भी इन्वॉल्व हैं, एवरीवन इज आस्किंग फॉर द पोस्टर, पूरे वलीमाई, वहाँ पे मेरे वलीमाई, पोस्टर्स लग गए थे, बैनर जी, लग गए थे, आपके बोनी 6 कपूर फुट के आपके 6 फुट के बैनर्स लग गए थे कि बोनी कपूर इज मिसिंग. हाँ. As a producer, how excited does it make you feel? Because you know, picture release होने से पहले, publicity start होने से पहले, एक the film is red hot. आपके पास है वो ग्लिम्स है पोस्टर्स का और बैनर्स का जो लगे थे. वर्ल्ड कप में पूछा गया था, मोइन अली से, अली भाई वलीमाई अपडेट. तो कमला हैरिस से पूछा गया, जो बिडेन से पूछा गया कि ठीक है भैया यू वन द इलेक्शन. कमला हैरिस से पूछा गया, भाई नाउ फाइंड बोनी कपूर फॉर अस. जो from Tamil Nadu, your roots are from Tamil Nadu. तो ये सब चीजें खैर. As a producer, how does it make you feel? Because you know that the buzz is there, and with the sort of experience that you have, that means that आपका initial आपका जो एक जो वो I है, am keeping my fingers crossed. The buzz is there, everything is there. It should remain post release too. and लुकिंग एट रिलीज के पहले का मजा मैंने ले लिया है. आई एम वेटिंग फॉर पोस्ट रिलीज. what about Ajith's popularity and the action in the film, which seems to be unprecedented? Well, it is something that you need to see it to know. And popularity, आप आइए चेन्नई, देखिए. मतलब वेडनेसडे रात को पिक्चर खत्म होगी 12 बजे, 1 बजे शो शुरू हो जाएंगे. कई ऐसे थिएटर होंगे क्योंकि पब्लिक इतनी जमा हो जाती है. मैंने खुद देखा है. रात की नई पिक्चर जब अजीत की लगी थी, मेरी खुद की लगी थी, नेरकोंडा पारवाई, उससे पहले विश्वासम. रात के 1-1:30 बजे मैं थिएटर पे गया था. कुछ 25,000 लोग बाहर थे. तो थिएटर में तो सिर्फ 1,000 ही आ सकते हैं. फिर 4 बजे के शो में भी देखा तो वही लोग खड़े हैं बाहर, कुछ अंदर के कुछ बाहर खड़े हैं. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती. यहाँ पे मुझे पता है मिस्टर इंडिया के टाइम पे राउंड द क्लॉक शो चले थे. मानिक थिएटर अकोला ने, मैनेजर ने मुझे ओनर ने फ़ोन किया था ये, एंड कहा साहब ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं. उधर भी उन दिनों में थर्सडे चेंज होती. वेडनेसडे रात को जो शो खत्म हुआ, थर्सडे पिक्चर देखने के लिए रात से ही लाइन लग गई थी. तो उन्होंने रात को ही थिएटर खोल ली, मानिक अकोला. तो दे स्टार्टेड सीइंग मिस्टर इंडिया एंड देयर वर कपल ऑफ अदर थिएटर्स which showed the film round the clock for the full day, and I think this continued for a couple of days, maybe till the weekend. बोनी जी, अगर आप कुछ अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में कुछ बता सकें हमें. आने वाली फिल्मों में खैर मेरी मैदान है जो कंप्लीट है. मेरी 5 फिल्में कंप्लीट है. वलीमाई लग जाएगी, मैदान जून में लगेगी, मिली मेरी बेटी के साथ जो मैंने बनाई है वो भी रेडी है, अप्रैल मई में वो भी लगेगी. मैंने उदयनिधि स्टैलिन के साथ आर्टिकल 15 का रीमेक बनाया, बधाइयों का रीमेक बना. ये तमाम 5 पिक्चर रेडी. और मेरी छठी मतलब एक नई फिल्म सेट पे जा रही है 9 मार्च को अजीत के साथ ही. तो दिस वुड बी माय 3rd फिल्म विद अजीत ऑन द ट्रॉट. So any tentative dates for when Ajith's film is going to be releasing? We're aiming for Diwali release. Let's see. Diwali this year or? This year, naturally. This year. Oh, okay. Alright, that's amazing. And Boney ji, you're also making an acting debut. वैसे आप AK वर्सेस AK में देख चुके हैं हम आपको. जी. लेकिन आप और हिंदी फिल्में भी शुरू कर रहा हूँ मैं. एक अपना अर्जुन के साथ करूँगा. अर्जुन के साथ 2 सब्जेक्ट पे काम चल रहे हैं मेरे. एक कुमाली है जो मैं तव रंजन और हम मिलके बनाएंगे, और एक F2 है जो अनीस बज़मी डायरेक्ट करेगा. दोनों फिल्में रीमेक हैं. फिल्म डेब्यू के बारे में अगर आप कहें एज एन एक्टर. हाँ, वो आप देख के बताइए. AK वर्सेस AK में हम देख चुके हैं. वैसे आपको कैसा था? बहुत बढ़िया था. बहुत नेचुरल था. बेसिकली नेचुरल था. बस आई प्लेड माई सेल्फ. ईयर ऑल्सो आई एम प्लेइंग माई सेल्फ. फर्क ये है कि वहाँ पे मेरा भाई अनिल था एंड आई प्लेड द एल्डर ब्रदर. Harsh was my nephew. I played myself there also. Here also I'm playing myself the way I am. फर्क ये है कि इधर रणबीर भी मेरे बेटे जैसा है, तो मैं रणबीर का बाप हूँ, और एक साथ में बेटी भी है, माँ भी है. तो इट्स लाइक माई ओन फैमिली. एंड आई मीन मज़ा आ रहा है काम करते हुए. आज तक तो ये था, इससे पहले तक तो ये था कि भाई मैं सेट पे ज़्यादा देखता सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही है कि नहीं, सब लोग खुश है कि नहीं है. अब नाउ आई एम फेसिंग द कैमरा. पहले बिहाइंड द कैमरा होता था, अभी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हूँ. मज़े ले रहा हूँ. सब जो मुझे पैम्पर करने की कोशिश करते हैं, 10 बार आके कोई पूछेगा भाई चाय चाहिए, ठंडा चाहिए, खाना चाहिए, नाश्ता लाऊं, ये लाऊं. अरे भाई कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है सर. आपकी वैनिटी वैन ठीक है सर, सब ठीक है सर. बोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर वालीमाई, एंड वी होप दैट इट्स अ ह्यूज सक्सेस. थैंक यू सो मच. फैंटास्टिक.